Daylight saving time DST. During the summer season, the countries which are nearer to North Pole and South Pole increases their standard time by 1 hour is called as daylight saving time. जो देश नॉर्थ एंड साउथ पोल के पास में होते हैं वे अपने स्टैंडर्ड क्लॉक टाइम को गर्मियों के दौरान 1 घंटा बढ़ा देते हैं, उसको डेलाइट सेविंग टाइम कहते हैं. द एप्लीकेशन पीरियड, द डेट इज ऑलवेज मेंशन विद द डेलाइट सेविंग टाइम. इसके साथ हमेशा तिथि लिखी रहती है कि यह कब से कब तक लागू रहेगा. नाउ आई विल शो यू द एग्जांपल ऑफ द डेलाइट सेविंग टाइम. मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ. नाउ हियर वी हैव द इंटरनेशनल टाइम कैलकुलेटर टेबल. यहाँ हमारे पास इंटरनेशनल टाइम कैलकुलेटर टेबल है. नाउ हियर इन दिस टेबल ऑल द कंट्रीज आर गिवन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इसमें सारी कंट्रीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी गई होती हैं. नाउ लेट्स से द अफगानिस्तान. अफगानिस्तान का हमारे पास वी हैव ओनली स्टैंडर्ड क्लॉक टाइम, नॉट द डेलाइट सेविंग टाइम, बिकॉज अफगानिस्तान इज नॉट नियरर टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो इसलिए दैट्स वाई वी आर हैविंग ओनली द स्टैंडर्ड क्लॉक टाइम फॉर द अफगानिस्तान. नाउ आई विल शो यू द कंट्रीज विच आर हैविंग द डेलाइट सेविंग टाइम. मैं उन कंट्रीज के बारे में जिक्र करता हूँ जिनके लिए डेलाइट सेविंग टाइम है. नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड इज नियरर टू नॉर्थ पोल. ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ पोल के पास में है. दैट्स वाई 2 टाइमिंग्स आर गिवन, -3 and -2. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हेन वी हैव टू कंसिडर द -2 फॉर आवर कैलकुलेशन. तो उसमें डेट्स दे रखी है 26 मार्च से 24 सितंबर के बीच में. इफ यू आर ट्रैवलिंग इन दैट केस फॉर योर कैलकुलेशन यू विल कंसिडर द -2, फॉर अदरवाइज यू विल कंसिडर द -3. This way we will determine whether for the calculation whether we have to consider the standard clock time or daylight saving time, because in this table we are having both standard clock time as well as the daylight saving time.